One second. हो गया ना. Let's do the contest. Weekly. The question one, sum of integer with maximum digit range. Easy question, you are given an integer array nums and the digit range of an integer is defined as the difference between its largest digit and smallest digit. For example, the digit range 57247 is 2 is equals to 5. Let me check. Oh, let's do the contest. Weekly. The question one, sum of integer with maximum digit range. Easy question, you are given an integer array nums and the digit range of an integer is defined as the difference between its largest digit and smallest digit. For example, the digit range 57247 is 2 is equals to 5. Let me check. So, something changing. One second. No, no, one second. Let me one second. Question says you are given an integer array nouns. The digit array of an integer defined as the difference between its largest digit and smallest digit. For example, digit range 5724 is 7 minus 2 equals to 5. Return the sum of all integer nums whose digit range is equal to the maximum digit range among all the integers in the array. So all integer number whose digit range is equals to all integers the array. Okay, 572411 and 350. Right. Hmm. नंबर नंबर कैसे है ऊपर मतलब अगर मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ ना
maximum 90 or 900. Yeah, एग्जाम्पल ये कंस्टेंट देख लेते हैं. How can I like find this question? Like ये इसमें ना इजी दे रखा है, इजी मतलब ऑप्शन दे रखा है. How can I find कि मतलब हम इसमें कैसे करें. Let me take the institution. Right. तो पहले हमें क्या मतलब कि we have to do कि हमें ना पहला फर्स्ट ईच नंबर का मैक्सिमम और मिनिमम निकालना पड़ेगा. And then we have to firstly mx and mn, right, and keep updating max range, right. And what we have to do कि मतलब अप्रोच कैसे है. अप्रोच में क्या करेंगे ना कि पहले फॉर ईच नंबर x वी हैव टू फाइंड all digit using while loop and of percentage operator, right. डिवाइडेंट वाला है. फाइंड mx और mn डिजिट करेंगे देन अपडेट दी मैक्सिमम रेंज. इजी लग रहा है, इतना मुश्किल तो नहीं है. So let's do the code. Firstly we have to find max range equals to 0 for int x equals to nums, right. int maximum हो गया, maximum equals to 0, मिनिमम हो जाएगा 10. अब टेम्पररी रहते हैं int temp is equals to x, right. अब temp को greater than 0 while temp is 0 int call equals to temp divided by 10. mx equals to max dot max or max, right. mn equals to math dot min cur or min, right. सेकेंड कर की स्पेलिंग यहाँ और temp हो जाएगा equals to 10, right. And max range equals to math dot max हो जाएगा max range mx minus mn. And then we have to max it, so int answer equals to 0 equals to 0, right. For int x nums and mx equals to 0. अगर 0 mx ले लेंगे तो mn वही 10 हो जाएगा.
Right, and now we have to temp equals to x, while temp is to 0, इंटीग्रल हो जाएगा temp divided by 10. Right, अब mx निकालना है, mx math dot min कर mx हो जाएगा, और वही mn का भी वही हो जाएगा, dot min कर और mn temp divided equals to 10. अब क्या करना है यहाँ पर, temp तक तो हो गया, right? If max range equals to mx minus mn and plus equals to x and return answer. Let me see and submit. Wrong answer. 57604. How did it wrong answer? Run through the max x. Yeah, max. Wrong answer, यार इसमें wrong answer किस बात आ रहा है? नेक्स्ट हम यहाँ तो गलती नहीं कर दी, 0 कहाँ गलती हो सकती है? गलती होगा सकती है। एक्स हाँ
है ना, बिन गया है ना, बैक लिखना था। एक्सेप्टेड हो गया ना। क्वेश्चन है, you are given two strings S and T consisting of lowercase English letter. You may choose at most one index in S and replace the character at that index with any lowercase English letter. Return true if it is possible to make S a subsequence of T, otherwise return false. Okay. Again, to string S and T consisting of lowercase English letter, you may choose at most one index. The character, the index lowercase return true, it was your subsequence. Cat, chat, true, plain, apple, false, BL, elegant, HNT, बिरयानी cannot be okay. सारे आने चाहिए वर्ड्स इसके अंदर, सारे तो आ नहीं रहे भाई। फिर एक सेकेंड, इसका वायर खराब हो गया। और उसका स्ट्रिंग पे भी इसको लगता है कि स्ट्रिंग वाले से हो जाएगा। एक सेकेंड, ये स्ट्रिंग्स सब्सिक्वेंस वाला ना, तो पहले वाला स्ट्रिंग का ही सोचता हूँ। आफ्टर वन रिप्लेसमेंट, सिंह के साथ लगता है कुछ और भी लगेगा इसमें, जहां तक मुझे लग रहा है। इफ अगर मतलब S is already a subsequence of T and the answer is immediately true, otherwise we are like modify exactly one character or choose not to modify, and we are using instead of like trying all 26 into an possible replacement, so we need to change, determine whether there exists an index in S whose replacement can bridge the unmatched portion. Like to achieve this efficiently, we pre-compute like left array I, the earliest position in T where prefix S as 0 to I can be matched as a subsequence, and right I the latest position in T where the suffix S in n minus 1 तक। अपोज तो पहला मेरा यही रहेगा। अपोज मेरा पहला रहेगा। प्रीफिक्स मीनिंग, प्रीफिक्स मतलब मैचिंग, right? First we have to scan, like scan, we have to like both from left to right, and for every character of S we have to store the earliest matching index in T, right? Left array I हो जाएगा earliest position of S array I after matching, and if character is matched then S is already a subsequence, so return true, and दूसरे में हो जाएगा suffix matching, right?
suffix matching. So suffix matching, similarly we have to scan from right to left. So the right array का latest position of S array before matching आ जाता है. So this records every suffix can start, right? And we have to try replacing each position, like assume we replace S array, the prefix must add the L equals left array I minus 1, right? इतना ही है. फिर इसके बाद मुझे नहीं लगता ज़्यादा होना चाहिए. सो पहले लेना पड़ेगा स्ट्रिंग्स को लेते हैं. तो पहले हमें लेना पड़ेगा एक लेंथ ले लेते हैं. टी टी लेंथ ले लेते हैं, राइट. रिटर्न बोल देते हैं इवेंट. नाम ले लेते हैं एस डॉट लेंथ इक्वल्स टू टी डॉट लेंथ. If n equals to 0, return true, right? अब वो लेफ्ट और राइट वाला करते हैं. लेफ्ट न्यू इंट n and right equals to new int n. अब array is not fill left minus 1, array dot fill right minus 1, right. And now we have to, अगर मैं ये देखूं ना हो गया. तो एरे कर लेते हैं. लेट्स सपोज वी हैव टू इंट p इक्वल्स टू 0, राइट. एंड फिर इटरेट कर देते हैं फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i n I increment, right. And then we have to while p m and t t dot care at all not equals to s dot care at I. If to to break like left array I is to be increment. If left n minus 1 not equals to minus 1, then we have to return true is equals to plus 1 plus 1, right. अब इसका इटरेट करके देखते हैं. फोर एंड I इक्वल्स टू n सेकेंड. फिर हमने इटरेट n minus 1 at I equals to 0 in decrement, right. So while p equals to 0 and t dot care at p,
into s dot care at field increment. If p less than 0, then we have to break equals to p increment 4 and I equals to 0 and I increment. If I equals to 0, left I minus 1 plus 2 minus 1 I 2 and minus 1 plus 1 to minus 1. Let me see. अगर 1 होता to L equals to I equals to 0 I minus 1 अब int r ले लेते हैं अब होने वाला int r होगा और एक सेकेंड ये कैसे आई int r equals to I equals to n minus 1 to m right I plus 1 L plus 1 r return true. Let me run the code firstly. 32, 32, 41, 41. ऐसा क्या है यार int I n minus 1 I is equals to increment right p अगर है greater than 0 t caret y r dot 41 and I was to 0 left not equals to minus 1 I equals to minus 1 right I not equals to ओके रुक जा लेफ्ट लेफ्ट माइनस वन यहाँ तक ठीक है ना फिर माइनस वन सी 41 वही एरर आ रहा तुम्हारा
ना 11 मतलब alright, submit the code. So we have to solve only two question, right? Now I end this.